Somewhere in the outskirts of Bangalore lies a settlement where a nomadic community of about 37 families are encamped. They are called Dholakwale, makers of drums. It is hours before dusk. The menfolk are still at work, making and selling drums. सारा दिन काम करते, थके हरे घर पे आते, अगर बिजनेस नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर पेट भर खाते भी नहीं, कम पेट खाने के बाद सो जाते हैं क्योंकि बिजनेस घर कैसे चलेगा. Their wives have spent most of the day doing household chores, and now it is time to prepare supper. क्या करती हैं सब सुबह काम वाम करके बैठी रहती, बिजी रहती. किस चीज में बिजी रहती है? बात करते हैं आपस में हंसते रहते, खेलते रहते, बस और बैठे रहते. अब मर्द आता है फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, बिस्तर धोना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को स्कूल भेजना. There is no electricity in this place. Tension rises as the women scramble to finish their cooking before the sun is out. The meal has to be hot and ready when their husbands arrive. Supper is taken in the deepening gloom with only one candle for illumination. The families beset by insects, rodents, even snakes entering their makeshift homes. The Dholakwale are roving migrants from the north, originally from the state of Uttar Pradesh. Landless for generations, they own no permanent dwellings, live a life of uncertainty, of constantly having to move to that next place to stay. क्या करा जाए, अभी किसी मकान किराए में लेने जाओ 4,000 यानी 4,000 रुपीस लगता है. वो गरीब इंसान आदमी कहाँ पाए, और जगह अपनी तो है नहीं है. जब जी चाहे तो उठा देंगे, जब जी चाहे, जब तक है जब तक रहेंगे, और जब उनका दिल आया जाओ तो जल चले जाएंगे. The community depends for their livelihood largely upon the specialized craft of making dholaks or tablas, drums fashioned out of wood or cardboard rolls, goatskin, bamboo strips, metal rings, rope, and a mixture of grease, engine oil, and limestone powder. फिर माँ बाप शादी कर दिया, बाल बच्चों को पालने पोसने के लिए धंधे को चले. वहाँ से रोजगार 10, 20, 50 रुपये लेकर 100 रुपये लेकर जब आते थे तो यहाँ खाना पीना चलता था, बीवी बच्चों का इलाज पानी चलता था. The drums are made by hand by the artisans whose skills have been handed down to them from their fathers and grandfathers. Every drum is unique. Each maker etches his own particular design on the body of the drum. The tabla players among the Dholakwale play in markets and town squares, beating out a repertoire of percussive rhythms to draw prospective buyers. सुबह से सही काम, सुबह सो के उठने का, ढोलक वोलक बना के फिर उसको कंधे पे डाल के फेरी करने के लिए जाते हैं. Sometime in the late 1990s, life took a turn for the better for the Dholakwale. Adam, one of the village elders, had never attended school. In his early teens, he joined the family business of tabla making. He moved around a lot, arriving in Bangalore in 1995. तो बेंगलोर में आने के बाद में इधर उधर घूमे, अपना कारोबार भी किया, लोगों से मिले, किसी से दोस्ती हुई, किसी से क्या है, ऐसा होता रहा. वहाँ पर कुछ लोग आए, ऐसा सेल्को का सेल बेचने के लिए, कुछ सेल करने के लिए आए थे, लाइट का. The people he met were from a solar energy company selling portable battery-run bulbs. They persuaded him to bring home one and try it. तो उसने कहा कि भाई देखो ऐसा आप लेकर देखिए, आपको अच्छा लगे तो लेना, नहीं तो नो प्रॉब्लम. हमने कहा ठीक है. तो हमने कहा भाई कुछ देना लेना पड़ेगा. तो उसने कहा कि कुछ नहीं, तुम 300 रुपये दे दो, एक दिन यूज करो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लेना, नहीं तो मत लेना. The bulb lasted for 2 whole nights, burned brighter than candles, and saved him 10 rupees, what he'd customarily spend each day for 2 candles. It was safer than kerosene lamps, no toxic fumes. He demonstrated how the bulb worked to the others in the community. They too were convinced. पहली बार हमारे पास एक लाइट देकर गए थे, तो उसको हम सब मिलके देख रहे थे. हर एक घर से एक आदमी आकर उस घर पे बैठा और उस रोशनी को देख रहा था. उसी वक्त में सबने तय किया कि इस लाइट को हम लेंगे. Since that meeting with the people from Selco,
Adam's life as a nomad and tabla maker has changed. He now owns a pushcart with solar panels and earns a living charging the bulb batteries of the villagers. And now, also their cell phones. His wandering days are over. For the women, cooking supper has ceased to be a distressing chore. पहले बिजली नहीं थी, हमें बहुत सा तकलीफ़ें उठाना पड़ता था। बिजली नहीं थी, हमें बिस्तर बिछाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी, खाना पकाने के लिए मिर्चा सामान अपना कुछ हमारा इस्तेमाल करने वाला सामान उठाने के लिए बहुत तकलीफ़ें होती थी हमें। जैसे लेट है तो रात में भी बना लेते हैं, दिन के भी बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। पहले टेंशन था कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए, नहीं अंधेरा हो जाता तो खाना नहीं बनता। Nighttime is no longer a dreaded time. Gone are the concerns over food dropping to the ground at supper or animals coming into their tents. The solar lights have given them added hours of productivity. The men could continue to make drums and the children to study in the evenings. It's still a hard life for the Dholakwale. The lights have somehow given them some hope and empowered them to pursue their dreams. For the young ones, education is a burning aspiration. Two youths share their views and dreams. अभी धीरे धीरे ये दुनिया बदल रही है, वैसे हम भी सोचते हैं कि हम भी कुछ बदलें, आगे कुछ तरक्की करें और ज़िंदगी में बदलाव आए, कुछ दूसरा भी आदमी के हाँ चलो भी बदलाव है इनकी ज़िंदगी में। मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं होगी तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। जब पढ़ाई करेंगे तो तभी बदलाव आएगा आगे ज़िंदगी में। यही ख्वाब है कि जो हम कर रहे हैं वो आने वाले जो हमारे जो बच्चे जो रहते हैं छोटे छोटे, ये ना करें ये सब चीज़, कोई दूसरा कोई काम करें। हो जाएगा, सच होएगा, ज़रूर होएगा एक दिन। With their eyes on a brighter future, the Dholakwale continue to persevere, carrying on the trade they know best. As long as there are people willing to listen to their music and to buy their drums, the Dholakwale will gladly play for their supper.